Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Whatever doubts you guys are having, please do ask. We'll start the streaming in 2 minutes. Good morning, Nitesh. Anyone has any kind of doubts, please do ask. Don't hesitate to ask. Good morning, Chaya. Good morning, Ritesh. 2000 पिप की 50% क्लोजर है. ग्रीडी मत होना. ठीक है. नहीं नहीं चलने दो. क्लियरली बोला हो. जैन तक फेब फर्स्ट वीक तक यही मूवमेंट रहने वाला है. कमाने वाले कमा लो. ग्रीडी होने वाले हो जाओ. Q1 में फिर से आपको 100 पिप 200 पिप में गुजारा करना पड़ेगा. What's the reason for increased volatility in gold compared to previous quarter? There is no reason. That's how it works. And there is no volatility in the market, Nilesh. Candle volatility is there for the retailers who enters in a running trade, right? So a person who is executing the trade with a setup, for him there is no reason for being scared or having the fear of the volatile candles. Market is never volatile from last few quarters. It's in direction. सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको. एग्जीक्यूशन एट द राइट सेटअप पॉइंट. दैट्स इट. I want to start testing on Bitcoin. How should I start? How to identify the perfect thresholds? 1 hour में. Wherever there is a high volume formation with the high volume formation rejection point at surplus or minimality or demand, with that point of action, execution takes place. Good morning, Rampuram Maithili. What a rejection. कुछ नया है तो बताओ please. Can you show example of volume and candle combinations to look for? Definitely, Chair. Let's have some breathing space. Gold analysis होने के बाद कर दो.
Lovely. ये सिखा दो सर काफी है। सीखी तो रहे हो। लक्ष्मण रेखा ऐसा ड्रॉ करो कि मार्केट भी डर जाए उसे पार करना है। नहीं नहीं, पार करता है। राइट डायरेक्शन, राइट अलोकेशंस के साथ। एग्जीक्यूशन परफेक्ट होना चाहिए। रीजन ऑफ एग्जिट क्यों बोला था इस पॉइंट ऑफ एक्शन में इज वेरी सिंपल। थ्री विंग सेटअप फॉर्म हुआ है यहाँ पे। कहा गया दिस पॉइंट। So the exit was allotted. Good morning, women. Waiting for one more member को आ जाने दो। स्टार्ट कर। यस, परफेक्ट। अभी तक इंटैक्ट नहीं हुआ है। आई एम नॉट लुकिंग फॉर इट। नीड अ प्रॉपर इंटैक्ट। Why didn't we take the demand from yesterday's 11 UTC में ना? Yesterday's level till, see, allocation perspectives is always look in the scenario of that only, no? Gap up opening है, right? Coverance always map क्या करेगा? Drop down. ड्रॉप डाउन के साथ डेवलपमेंट आया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे यही तो अलॉट होगा, राइट? विद दिस अलॉटमेंट ओनली दिस रिजेक्शन केम इनटू द प्ले, राइट? 100% रिजेक्शन होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू लुक फॉर? Retracement allocation. Retracement allocation is taken in the pursuant of the previous first come first serve supply. First come first serve supply allocation, 100% rejection, S2B1 setup with S2B1 setup drop. Same drop point के हिसाब से what is the new allocation that will be played? First come first serve demand. The first come first serve demand was taken under the concept. Same rules as followed, Nilesh. We haven't changed anything at this point, no? Few calculative errors market दिखाएगा आज की फर्स्ट हाफ में, राइट? सो सेटअप के साथ ही एग्जीक्यूशन में रहना। रनिंग में एंट्री करोगे तो आईडी ट्रेड का फर्स्ट टारगेट इज 150 पिप्स। 150 पिप्स में निकलने की कोशिश करना, ग्रीडी मत रहना, क्योंकि ऑडिट्स कंप्लीट हुए। there will be some good execution points which could take a play. So be with the setups, don't execute it.
at a random play. ठीक है? Where did it go? Sorry, erase हो गया था, my bad. Thank you, Agastya. Good morning, Shreyas. Right? So, what are the major things that you have to be looking today for an execution perspectives in an ID, not in a perspectives of swing? So, allocation one will be taken consideration from the 1 hour time frame. What do we notice in 1 hour? Do we have a high volume change in structure? Yes. Right? So in this point of action, the reason of 50% exit of our swing trade is a high calibration point. So high calibrating point complete हुआ है यहाँ पे आज के दिन पे. With this high calibration point, the next step of action will be a retracement which needs to be taken under the consideration at 4065. ये वाला जो intact pending है and 4069 का. Because कल evening session में market was in a circulating supply which shouldn't have been a play at first point in this quarter create हुआ है. But एक चीज ध्यान रखना, जब भी सर्कुलेटिंग सप्लाई आता है, मार्केट जब भी ब्रेक डाउन या ब्रेकअप देती है, market tends to follow a numerical plan of action. The numerical plan of action will be always through an intact point, not out of it, right? So with this scenario, आज के दिन में अगर नोटिस करोगे, इन द टाइम फ्रेम न्यूयॉर्क पीएम सेशन में हमें एक हाई वॉल्यूम मिला था जो रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर बिल्ड आउट की थी. उसके बाद आज के दिन में मार्केट हैज क्रिएटेड अ सस्टेनेबल प्लान ड्रॉप. मतलब न्यूयॉर्क पीएम में हाई वॉल्यूम यहाँ पे डेवलप हुआ. दिस स्टेज पोस्ट हाई डेवलपमेंट एशियन सेशन में जो हाई वॉल्यूम डेवलप हुआ इज डेवलप्ड at this point in this candle, correct? Means there will be a retracement till the first nearest intact point जो कि हमारे को जो चाहिए था वो अभी मिला है. अभी अगर मार्केट सस्टेनेबली आइसबर्ग जोन में डेवलप होती है for next few hours, 3 to 4 hours, market could continue the movement till the nearest LG point which is at 3979, right? If not, market will give an enhanced movement by creating a liquidity of retailers because candle fluctuation ज़्यादा है. 5 minute में the candle moves in a very faster way, so the liquidity will be hunted for few hours in this zone. Then the market could create a setup and follow through in the direction. Reason to be kept at this point is let the market give an indication of holding reversal trade. Till then, be in an ID point of structure. Okay. So with volume, market has showcased a reversal of a first retracement point of action. So first retracement point of action में allocation कौन सा आएगा? ये वाला green candle, correct? The supply which will get into the play. When this supply gets into the play, if it sustains in the same supply allocation, the market could tend to continue the movement. If there is a break of 150 or 200% and sustainability on top of it, market could take a swing allocation towards the long side and it could end the era of the short. So 1 hour is currently indicating a retracement which needs to be created, जो कि at the current point first indicating point of action से development दिखाया गया है. Then now we will come to 15 minutes.
In 15 minutes, what do we notice? This current candle is having an LG point? No. So without creating a wick, if the market is falling, I am not interested to look for an add-on with this intact, because always remember, the movement without a wick means it's a trap. हमेशा वो लिक्विडिटी हंट करने ऑपोजिट पॉइंट तक आएगा ही आएगा. To keep in mind, so this is the new candle which will be closing within next 15 minutes. Suppose that whatever the market is going to allot will be the next few minutes allocation in the direction, right? So in that pursuant, what do we notice? This is the previous supply that we have at the current stage for the ID. So the same supply, high week range se map out, 100% rejection, 100% rejection से sustainability दिखाया. बट क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते? नहीं, बिकॉज देर इज नो वे. रिट्रेसमेंट दिखाया, अलॉट हुआ, मूवमेंट डेवलप हुई, ब्यूटिफुल. बट विदाउट क्रिएटिंग अ विक, इफ इट्स फॉलिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. So always remember, let the market create the wick, then create the fall if the market wants to come down. Okay. So keeping in mind, रिट्रेसमेंट का ऊपर सस्टेन होता है तभी ही स्विंग के लिए अलॉट करना लॉन्ग ट्रेड, वरना मार्केट कुड कंटिन्यू slow and steadily towards the short in the first half. Any doubts in gold, guys? No, it doesn't matter. प्राइस इम्बैलेंस होने दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. करेंटली मार्केट गोल्ड बबल इज ऑफ 68%. 68% गोल्ड बबल जब है, जो कि ईयर ऑन ईयर डेवलपमेंट इज ऑफ ओनली 25% इन गोल्ड. सो 68% वन शॉट रैली दिया है, तो it has to create a proper retracement angle point of at least 35%. So till that 35% is not being cleared, the execution of allocation towards the long sustainability bull run in the next year will be very difficult, which is in 1 month. So don't hurry. छाप लो, छापना है. क्योंकि बबल जोन में जब भी रहता है मार्केट, क्लियर कट एग्जीक्यूशंस डेवलपमेंट में आती है. डेवलपमेंट के साथ शॉर्टफॉल क्रिएशन आती है. शॉर्टफॉल क्रिएशन के साथ मूवमेंट वर्सेटाइल रहता है. And in with that versatile movement, what is the one thing that you have to keep in mind? Candle volatility बहुत रहती है, जहाँ पे हर एक रिटेलर्स को ट्रैप करेगा. Here both S2B1 for short and 3 wing for long is formed, then what to be considered? At first place, there is no S2B1 formed. There was only 3 wing for a retracement trade of action. Right? Follow the chapter of S2B1 allocations with the volume. You will understand it better. Short example, short explanation. Whenever the formation has deliberately set up 2 के साथ जब formation continuity में आती है, always remember. So is it in the retracement point? अगर ये retracement point of action में closure दिखाया है, then definitely the trap allocation towards the short is way too higher. Why? Because in this point, all the retailers will be working with an exaggeration of an allocation through fib levels, right?
ये पॉइंट से लेके देख लो, ये 0.6 एंड 0.5 से रिजेक्शन ले रहा है फिब लेवल्स, right? So with that, with the considerative moment, the allocation will be taken in consideration of only with the wicks. Good here. After a very long time, there is a liquidity calibration. नहीं हुआ है अभी तक. 4 minutes है. 4 minutes में सेम जोन ऑफ एक्शन में क्लोज होगा, तभी ही माना जाएगा, उससे पहले नहीं. No assumptions, no acquisitions of allocations, no redirections of FOMO executions. अगर liquidity calibration इस point में आ गया, तो everyone knows what needs to be done, जो कि बहुत rare है. सर आपका कोर्स किया तो फुल ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? मैं कोर्स बेचता ही नहीं हूँ जनाब. Sir, can you explain and show here what is S2B1 and what is S2B2? Follow the chapter, think positive. S2B1 and S2B1 and S2B2. Hmm. अरुंधति मैम, अलोकेशन गलत है थोड़ा, रीडेवलपमेंट में डालो एनालिसिस को. स्क्रीनिंग सही किया है आपने, बट 15 minutes allocations गलत है. प्लीज रीचेक. गुड जॉब स्मिता मैम. 2000 पे कौन कैप्चर करता है? करने वाले करते हैं सर. फैजा, नहीं नहीं रुक जाओ. निफ्टी में एक छोटा सा डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से ही अलॉट अलॉट करना. कहाँ मन मिलता है वहां पे एंट्री कर लेते हो यार तुम लोग. लॉन्ग के लिए क्यों देख रहे हो? अलोकेशन पॉइंट करो, सस्टेनेबल ड्रॉट दिखाओ, रीफ्रेज एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करो. राइट? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये वाला अलोकेशन है आपका. राइट? सो पॉइंट वन which will be played, gap up opening थी, profit booking and as well as there is a short sell point. Right? 100% से rejection development दिखाया 15 minutes में. So execution कैसे होगा? Right?
Do we have a retracement point of action? Do we have a change of character? Yes, we have a change of character. Conversion करो ना पहला. So allot the conversion point here. With the conversion point, next trade of execution will be showcased. Not prior to that. Why didn't you do the conversion? Follow the rules. Liquidity calibration हो गया. So today as well 600 plus. Oops. शांत हो जाओ यार. 3979 तक देखना, उससे ज्यादा नहीं. कोई डाउट्स है किसी को भी? I said in 1 hour, in 1 hour, 14th November, 5 p.m. to 9 p.m. If we do allocation here, the market gives a target of 100% at 3946. Why are we not looking into that perspective? In 1 hour, 14th November, 5 p.m. to 9 p.m. 5 p.m. यूटीसी में देखते हो क्या रितेश? 4, अगर यूटीसी में देख रहे हो, सी अलोकेशन पर्सपेक्टिव इज वेरी सिंपल, राइट? वॉल्यूम चैप्टर खोल लो, राइट? सो वॉल्यूम चैप्टर में हाई कैलिब्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू को खोलो, राइट? सो हाई कैलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यूटीसी में 5 बजे कहा गया 5 to 9 ना पीएम. ओके, 1 सेकेंड. यस, तो इस पॉइंट ऑफ एक्शन से अलोकेशन देख रहे हो टिल 9 o'clock, till this point.
right? In that pursuance, right, what do you have to do? You have two options to work on, right? So with this TTS 2.0 अगर आप draw out करते हो, right? So what will market tend to allot? Market will tend to allot a movement for a substandard allocations of a higher time movement, right? उसके हिसाब से allocation के perspective से golden ratio से already direction ले चुका है, right? So with that, following through, what is the next step that you will do? Okay, so this is my first demand. What will come into the play? With this demand, my new allocation will get an add-on view. The creation of M1 is formed. With the creation of M1 is formed, the target allocation will be in development of M2 point of action only, no? Right? So from what level of allocation you got the number of 3946? Because LG point भी अगर आप चेकआउट कर रहे हो वो LG point of action is also at 3979 in the previous. So where is that LG point? Yes. So the LG point of action is at this range. यहाँ पे कहाँ गया? ये वाला कैंडल, राइट? अगर मैं यहाँ हटाता हूँ, ये वाला रेंज ऑफ मोशन पे LG डेवलप हुआ है. तो वो LG डेवलपमेंट में मूवमेंट वहां तक की एक्सपेक्टेशंस है. इंटैक्ट लेवल ब्रेक होने के बाद होगा, right? Not prior to that. So always look for and exhibit allocations through the movement of volume. Don't go against volume. Why are you going against volume? Why are you thinking like a retailer at this point? Remove that mindset. Okay? कोई क्या हो गया? मतलब पक्का है 500 पे प्लस मोमेंट. So what is your reversal buy level now? We don't give tips over here, man. आप खुद स्क्रीनिंग करो, आपको पता चल जाएगा रिवर्सल कहाँ पे है. Okay, Nitesh, hope you got the point. Streaming will be there for next 40 minutes. जो भी doubts, sorry, next 15 minutes. जो भी doubts है, please do ask. Yes, yes, चाय का है पता है. वो क्लोज होने से पहले मैं कर दूंगा BTC का. फर्स्ट टारगेट 400 का लेके चलना वरुण. गुड मॉर्निंग आर्या.
सर मैंने एक मेल भेजा था, आपने देखा? वर्षा चेक करो कोई मेल आया है। सर आपका नाम क्या है? नितेश। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। कौन कैप्चर करता है 2000 पिप्स? भाई हम कल के दिन में 800 पिप कैप्चर किए, क्या बात कर रहे हो? 200, 2000 पिप्स। तेज वर्षन, चिल आउट। फॉलो द चैप्टर सरप्लस छाया। सर यहाँ पे कंफ्यूजन है। इफ वी अलोकेट द लेग फ्रॉम 14 8 a.m. to 1 p.m. UTC, 1 hour पे। सर यहाँ पे कंफ्यूजन है। इफ वी अलोकेट द लेग फ्रॉम 14 नवंबर 8 a.m. to 1 p.m. UTC to 5 p.m. to 9 p.m. leg, it gives a target of 3946, also minimally formed here। वॉल्यूम साथ दे रहा है उसके साथ रितेश? उस मिनिमलिटी के साथ वॉल्यूम साथ दे रहा है? नहीं। अगर वॉल्यूम साथ दे रहा होता तो डेफिनेटली मिनिमलिटी फॉर्म आउट होती, राइट? Screening perspective, execution point is always look with what action plan? Hmm? 15 minutes, right? So 15 minutes execution point के हिसाब से allocation should match with the number point of view। नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से मैच आउट करोगे तब TTS 2.0, एंड उसके साथ there should be a supply or demand or surplus or a minimality form with that number at that point। That's when the new allocation gets into the play। Okay, so it's a 12 point of view which you have to carry it together, Ritesh। आपने TTS फॉलो किया, मिनिमलिटी फॉलो किया, सप्लाई एंड डिमांड फॉलो किया करके टारगेट्स उतना लंबा लंबा नहीं लेके चल सकते। TTS के साथ सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड के साथ मिनिमलिटी, मिनिमलिटी के साथ सरप्लस, सरप्लस के साथ वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ हाई कैलिब्रेशन के साथ POI। With POI you have to follow a proper screening। Okay, suppose then only the new allocations will be taken under the considerations, not prior to that। Follow the rules। This is the second time I am repeating, third time I will not repeat to you, Ritesh। हाँ सॉरी, और एक मिस्टेक है ना, सो और एक बार रिपीट कर दूंगा बट उसके बाद नहीं। Allowed for only 3 mistakes, not more than that। Give me a proof that you captured 800 pips yesterday। Proof। जितने भी लोग ग्रुप में है बता दो यार, प्रूफ। आपका नाम क्या है?
Name updated 2 months ago. Mafia, it seems. No, don't be sorry. Just one thing that you have to make sure is don't repeat that mistake again. Hmm? Because you're in learning stage, so acceptable. कभी कभी दिमाग से निकल जाता है बट साथ में लेके चलना ओके एक सेकंड रुको यार इधर एक था उसको लाइव में ही प्रूफ दे देता हूँ हाँ लो भाई राइट अलोकेशन हमारा था एट 4086 टुवर्ड्स द शॉर्ट ओके एंड 2 बजे को गोल्ड का न्यूयॉर्क सेशन का लेवल्स अलॉट हुआ है रिजेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एक्शन ये किसको दिखाए थे वैसे हाँ ओके न्यूयॉर्क मैडम को राइट with S2B1 intact execution point, right? Minimality M2 formed at 4088. With that, target is always minimality का M2 का 200% है 200 pips running 100% of M2 was at this point ये नया है right followed through target 280 pips उसके बाद 2 ट्रेड चल रहा था आईडी में कल के दिन में राइट सो एक ट्रेड हमने 570 पे क्लोज किया एक ट्रेड चल रहा था जो कि ये वाला है 280 पिप्स रनिंग विद स्ट्रॉन्ग एमडीएसएल सो आज सुबह में 780 पिप्स रनिंग में था कल का ट्रेड एंड उसका जो ट्रेड अभी भी चल रहा है एग्जिट नहीं किया हम राइट सो दैट इज 830 पिप्स राइट सो विद दैट 830 pips running we had closed only 50% of 200 sorry 2000 pips which is of the swing trade okay टाइमिंग भी देख लेना रिवाइंड करके चाहिए तो सो सुबह 8:43 को लेवल शेयर हुआ था एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू का एंड 50% स्विंग ट्रेड 2000 पिप्स क्लोजर अभी भी 50% चल रहा है हमारा एंड ये जो एग्जीक्यूशन है ना उसका एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली टॉप से पकड़ा है हमने यहाँ से ठीक है होप यू गेट दैट पॉइंट इसके बाद मत पूछना इसके बाद पूछेगा तो वर्षा ब्लॉक कर दो एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट प्लीज डू लेट मी नो एंड जो S2B1 इंटैक्ट करके देख रहे थे ना वो S2B1 इंटैक्ट देख लो यहाँ पे ही है मिनिमलिटी M2 के साथ फर्स्ट टारगेट
Mafia name got changed to Srihari. Okay, Srihari. वो तो वरुण की बहन की है। सर कल की भी ट्रेड बाई नहीं किया। कल एक ही ट्रेड बाई किए थे। ये वाला था सेटअप, कहा गया वो। ये वाला था। थ्री विंग सेटअप फॉर्मेशन के साथ एक ट्रेड, 25 पिप्स। वरुण, नीतू से लेके फॉरवर्ड कर दो ना मेरे को। जो भी मेल भेजा है उसको। व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दे। वो सिर्फ आईडी ट्रेड था श्रेयस। सो 250 पिप्स वाज द क्लोजर टारगेट तक। उसके बाद शॉर्ट। अगर शॉर्ट का भी फोटोस होता तो मैं शेयर कर देता। कल के दिन शेयर कर दूंगा। वो जो 2000 पिप्स की मूवमेंट आई है ना, फुल टॉप से। आईडी ट्रेड में 50% एग्जिट किए थे, क्योंकि ऊपर एस टू बी वन था। उसके बाद री एंटर अलोकेट हुआ था उसके साथ। सर छाया का, हाँ, सॉरी, माय बैड। यस। So Chaya, you have to keep only one thing in mind in 1 hour, right? Wherever the allocation perspective is developed, sorry, wherever the allocation perspective is developed through and formulation of an external liquidity, right? External liquidity को हम threshold बोलते हैं. So that formation is always inhabited with a center candle high range wick, right? So it could look something like this, right? Exact threshold formation की देखो मत. Center candle should be bigger than your A and C candle. Let it be for long position ऐसा हो, short position के लिए ऐसा हो, right? But the B candle should be bigger than your A and C candle. In that perspective, you will have an allocation with a proper rejection point with a supply or demand or a minimality or a surplus, right? Always remember that this should be taken in consideration at TTS 2.0. If the TTS 2.0 का पास है, तब जाके
एग्जीक्यूशन रिवर्सल पॉइंट ऑफ एक्शंस में देखा जाएगा, नहीं तो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? राइट। एक 3000 पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया था लॉन्ग के लिए, विच वाज ऑन 14th। राइट, एक सेकेंड, 14th का आ गया। हाँ, सो 14th में अगर नोटिस कर रहे हो, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, the B candle wick is bigger than ENC, execution with the setup of intact, इस point of action से execution होके nearest intact point तक ही trade of execution develop हुआ, right? So that will be the way out of looking into the executions. Same point of view towards the short, candle 1, candle 2, candle 3. Candle 2 is bigger than candle A and C, which is 1 and 3. What did you notice? The movement development is towards the short. अगर allocation perspective में जा रहे हो, first come first serve के साथ point of interest 1, break and continue, 150% rejection, right? Simple rule of execution को follow करके चलना. So definite movements is allotted with pursuance of external liquidity point, which is threshold. And do we do the allocation in 15 minutes for execution in Bitcoin or in 1 hour? Only if it will be executed. 1 hour में setup create होने दो, 15 मिनट में उसी point of action में you will get an allocation with the setup. Right? So this is the threshold point. With the threshold point, come to 15 minutes. What did you notice? A POI range form. With the POI range form, follow the POI range rule. With the POI range rule, execution. All right. S2B1 setup 1 यहाँ पे डेवलप हुआ था. अगर यहाँ पे कंफर्मेशन डेवलपमेंट नहीं थी तो इंटैक्ट के साथ री एग्जीक्यूशन. ओके. अगर आईडी में ट्रेड करना है तो 15 मिनट्स में अलॉट करो, रिवर्सल्स के लिए नहीं, सिर्फ आईडी, विच इज 1500 points in BTC are ID targets on a regular basis. So get that allocation with normal S2B1 setup and 3-wing allocation only. Okay. Next target is 86,500. Guys, MTSL 95 पे रख लेना. भाई इतना ट्रेड्स प्लेस कर रहा है तो तेरे को बुक स्पॉन्सर क्यों करना है आर्या? गाइस, लास्ट 5 minutes, जो भी डाउट्स है प्लीज डू आस्क. MTSL स्टार्ट कर दो भाई साहब. मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा ना. व्हाई शुड आई?
नहीं नहीं अगस्त्य, एक गेम प्लान करते हैं, ठीक है? परफेक्ट। हम्म। सेम रूल्स। नो चेंजेस। All the LTD members, make sure only one thing: ग्रीड में एग्जीक्यूशन रिजेक्शन पॉइंट्स में मत दिखाओ आप लोग यार। Okay. So whichever strategy, whichever concept, whichever allocations you guys are following, it doesn't matter to me. Make sure 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis, then come with a small capital. Compound that capital. While compounding that capital, make sure to protect it through fear, FOMO, and greed. How can you control on this three? Is through doing meditation, yoga, and reading books because it's your hard earned money. Protect that money through your psychology, your learnings, your execution, your analysis, and your point of view. So this is Nitesh signing off. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए take care. Bye bye. Have a nice day, guys.